Assalamualaikum viewers and listeners, welcome to the latest episode of All Rounders 10. आज दो टीम्स का मैच था न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का बट जीती पाकिस्तान एंड हेयर यू गो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए स्कीम्स वर्क करना शुरू हो गए हैं बट officially as you all know New Zealand have lost by 190 runs against the Proteas who were on hellfire I would say and they just steamrolled in both batting and bowling. Kiwis had no response and Kiwis had like all sort of excuses as well, I would say. So आज का हमारा एजेंडा यही रहने लगा कि आज हम रिवाइंड करेंगे आज के मैच का पाकिस्तान को इस मैच से क्या बूस्ट मिला है एंड व्हाट वर द ब्लेम शेयर फॉर Kiwis. मैंने Kiwis के ब्लेम शेयर की क्यों बात की. On this note, I would like to welcome our esteemed guest. It is our second appearance on All Rounders 10. अफगानिस्तान के मैच के बाद इन्होंने हमें ज्वाइन किया था. Now I am more than humbled and excited to have her back on the stage, and that is Nimra, all the way from UK. So Nimra, I know you are happy but not happy. So yeah, welcome on the stage. क्या हाल चाल? How are you? Hope you're having a good day. Or yes, I enjoyed the match. Basically, pre-match it was a win-win situation for me. But after the match and during the match, I shifted my sights back towards Pakistan. So obviously, New Zealand defeat was necessary for a push-up. That's why I'm happy about it. But if you think about it, about the perspective of New Zealand fan, obviously it's a setback too. Yeah, so Nimra ने already segue कर दिया. हमारा first segment that is pre-match vibes. On that note, let me formally welcome Husana on the stage as well. Husana, क्या हाल चाल है? And before the match, of course, हमने तो न्यूजीलैंड को हरवाना था. But if you were given three options in front of you, which would you pick? Hello, assalamualaikum everyone. But pre-match, I was worried about the toss. The thing is, I wanted South Africa to win the toss and bat first because we all know the weakness of South Africa of not uh, doing the chase. So yeah, but New Zealand put them to bed. So Yeah, all right. win-win. I can hear you out. Okay, coming towards me, I know Kesa has joined us. Kesa, आपको welcome करता हूँ. Let me have my pre-match vibes first. I would go with option number one. Bring on the underrated RB. जितनी RBs हमने देखे हैं, of course आज chat पे आप लोगों ने देखा होगा कि 2019 के वर्ल्ड कप के बाद ये लोग पहली दफा आपस में खेल रहे थे. So they don't play that much with each other. और जब भी इनके मैचेस में वर्ल्ड कप में more specifically they have been nail biters like all time classics. So as much as I was urging for South Africa to win, I was playing that song of Shakira as well. It's time for Africa. So yeah. But anyway, Kisa, thank you so much for joining. Hope you are doing good. जय इस segment पे आपका आंसर क्या बनेगा? थैंक यू अहमद. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, ये प्री मैच फाइट्स पर Yep. वही फर्स्ट वन आला, ब्रिंग ऑन द अंडररेटेड डर्बी. नॉट विन-विन सिचुएशन. ये निम्रा के लिए होगी. निम्रा के लिए. ये option I just picked out for Nimra. So option B for Nimra, I have gone with myself and Kisa, and almost Hussein has gone with option A as well. Moving forward, I would switch the mic to Nimra because we are digressing towards lineup. और Nimra, Kiwis ने like यहाँ पे दो talking points बनते हैं, दो questions हैं ना वे. First is Kiwis choosing to ball first. इंजरीज की वजह से कुछ चेंजेस करना पड़ते हैं. सो हैव योर से फर्स्टली के बॉल फर्स्ट करना. ऑफ कोर्स अभी हम हाइंडसाइट में बात करेंगे बट एट दैट टाइम डू यू थॉट इट मेड सेंस? और जो अपना कीवीज ने लाइन चेंजेस की, डिड दे मेक सेंस फॉर यू और हाउ डू यू वर फीलिंग एट दैट स्टेज? ये जो चेंजेस थी वो फोर्स थी. सो इसलिए चेंजेस के ऊपर ब्लेम नहीं किया सकते बिकॉज इंजरी फ्रॉम प्लेयर्स हैं और काफी मैसिव इंजरीज इनको हिट की हैं गलत टाइम के ऊपर. बट क्या कहते हैं, जो आपकी कैप्टनसी है वो बहुत मैटर करती है. और लेथम, आई डोंट ट्रस्ट हिम एज ए कैप्टन, बट थ्रू आउट द वर्ल्ड कप ही वाज शोइंग गुड मूव्स. बट आज उन्होंने प्रूव कर दिया कि ही इज डेफिनेटली नॉट अ
because at Pune pitch, you are willingly opt to ball first. That was so horrendous decision for me. बाकी इनकी जो lineup थी, because Lockie Ferguson was injured and Kane was injured, so they have to replace them with Saudi and stick with Young. So basically, lineup changes were forced. But about the toss, that was a very horrible decision to ball first willingly on Pune pitch. जबकि they knew already that South Africa has a bad reputation in chasing the games, and they were putting constantly 300 plus targets when bat first. So I was so shocked while let them pick to ball first after winning the toss. Um, I was imagining कि okay, if the बाबूमा अगर टॉस जीत लेते हैं तो फिर हम देखते हैं कि okay fine, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती चूज करने की, but he willingly opt to ball first. That was so horrible, especially at the Pune pitch. After that, they have no option other than being hidden. So they got hit for scores, and obviously, maybe उनके backman में कहीं ये था कि due factor आ जाएगा in the second innings, so they will have a chance. But obviously, it didn't have good impact. All right. In this moment, I would welcome Iris Khan on the show. He is asking a question. Is Saudi playing against us? मैंने ट्वीट भी की हुई है, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बात की थी कि साउथ अफ्रीका ने तबीयत शमसी को हमारे लिए बचा के रखा होता है, हमारे लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। इस सऊदी बैक ही मैच नहीं खेलेगा, हमारे खिलाफ जरूर खेलेगा, एंड ही इज गोइंग टू पिक 3 or 4 wickets. So yeah, Iris Khan, thank you for pitching on the show. Stay tuned with us as we have lot more to discuss. Uh, Kisa, let's have discussion, a little bit discussion. Let's keep it quick and far. Moving forward, South Africa पे आते हैं. I think so. They have got so much luxury. Their options are so much fantastic. अब पिछले मैच में देखें, उनका मैन ऑफ द मैच था तबीर शमसी, राइट? बट दे ड्रॉप्ड and brought in Rabada, of course, जो पिछला मैच in a way rest किया गया था, या rest drop, whatever you put. So at last moment, आप 60-40 देना चाह रही थी किस टीम को? So how do you consider the South African selection? Over to you. नहीं, their selection was pretty on point. जिस तरह से उन्होंने शमसी को हमारे खिलाफ खिलाया, they knew कि हम थोड़े स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं, और जिस तरह की आज की लाइनअप थी, तो जिस तरह के जैनसन प्लेयर है ना, वो बहुत स्टेबिलिटी ऐड करते हैं साउथ अफ्रीका की इस लाइनअप में। उसके अलावा टॉस की अगर मैं बात करूं तो मैं यही दुआएं करी थी कि लग रहे साउथ अफ्रीका पहले खेले, क्योंकि चेस करने में जिस तरह निमरा ने कहा कि वो बहुत ही 280 उनके लिए इतना मुश्किल हो रहा था चेस करना, तो वो चेस करने में थोड़ा मुश्किल होता है। वो नेदरलैंड्स के खिलाफ भी चेस करते हुए आ रहे थे, तो आई गेस ऑब्वियस कि वो थोड़ा चेस करने में प्रेशर में आ जाते हैं। तो मैं यही दुआ करी थी कि पहले साउथ अफ्रीका खेले, फिर 400 मार दे और फिर न्यूजीलैंड अंडर प्रेशर आ जाए, और वही हुआ। Yes, we were in ideal situation. We were in ideal situation. So कैसा आपने सेगवे कर दिया है फर्स्ट इनिंग्स की तरफ? व्यूअर्स जो कैन सी द समरी, साउथ अफ्रीका ने 357 पे 4 लाइक 357 स्कोर बनाए और 4 ही आउट हुए उनके। पुणे में ये मैच खेला गया। Okay, Nimra, of course, you being the resource person, there are some talking points, but let's break it one by one. You predicted, I was having a pre-match chat with you, you predicted that early movement मिलेगी, New Zealand have to capitalize on it. In a way, they capitalized, specifically Matt Henry, who was really, really impressive just before he got Crowley injured. But बोल्ट को विकेट्स नहीं मिली. सो हाउ डू यू सी द फर्स्ट फेज ऑफ प्ले जिसमें साउथ अफ्रीका ने 51 for 1 किया, एंड ऑफ कोर्स उसी में मैट हेनरी को इंजरी को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं. सो हाउ डू यू फेल्ट अराउंड दोस फर्स्ट 10 overs? Actually, after the toss, मुझे पहले idea हो गया था कि बूमराह कि if they are willing to do ball first, तो obviously उनको ज़्यादा कुछ ऑफर नहीं होगा. But obviously Bolt and Henry tried in the first few overs, और उसके बाद भी हुआ था कि क्यों देखिए आपका जो प्लेयर है साउथ अफ्रीका का लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट काइंड ऑफ मग. So I was expecting Bolt to pick him, और जो head to head रिकॉर्ड है between Bolt and QB के, वो भी Bolt के फेवर में था. So it was surprising कि pick नहीं किया. Bolt for the World Cup is kind of economical, but he hasn't been picking up wickets. So that was the reason point. I was expecting Henry to pick wickets, but Henry got hit first and then he got injured. So that was a setback, especially in the middle overs. And then because Henry doesn't make a lot of impact in death overs.
Yeah. It's not a great impact over death overs. So in the middle, I was expecting him to step up, but obviously Nisham had to take over in the middle of the over when Henry got injured. But obviously, in the second innings, if you notice, from the very first over, they got a little amount of swing. So I was expecting yahi hoga, and that happened. So that was the first point of Henry and Bolt. All right. Hosanna, coming towards you, let's have perspective of South Africa here. Quentin de Kock, it was like Quentin de Kock or even Rassie van der Dussen, it was like scrappy knock from both, even up till their 80 runs from individuals. But they kept it grinding. And what a World Cup, Hmm. what a legacy, I would say. Quentin de Kock would be leaving 4 World Cup centuries. So, how do you see his performance today and taking on the likes of Santner and Ravindra, who has been really, really good for Kiwis? Okay, so the first, by looking at the scores, they were being very very cautious in the beginning, like रन बॉल या रन बॉल से कम खेल रहे थे, तो ऐसा लगा था कि इनिंग्स बहुत स्लो जा रही है, ये 300 भी नहीं लग रहा था, Hmm. बट इट वाज नॉट फॉर श्योर, अभी क्लैप्स हो सकता है होने को, तो बट एंड साउथ अफ्रीका आर चोकर्स, सो कुछ हो भी सकता है, बट देन आई थॉट कि पिच में कुछ होगा, दैट्स व्हाई दे आर प्लेइंग कॉशियसली, एंड वंस दे क्रॉस्ड लाइक आई थिंक 35th or 32nd over, they went berserk and they put up a monstrous total of 358. You know, after score हो भी गया था ना, मुझे लग रहा था कम है, but yeah, they were, it was a really good innings and smartly played. They were not going for big shots or not playing risky shots. They were pacing बहुत अच्छी थी इनकी, तो I very very smart cricket from both of them, Rassi and Quentin. जा कैसा मैं आपकी तरफ आता हूँ बट निम्रा जो मिडिल फेस में ऑफ कोर्स 200 प्लस की पार्टनरशिप होती है बट इन बिटवीन दैट मैंने थोड़ा सा मेंशन कर दिया कि स्पिनर्स न्यूट्रलाइज करते हैं एंड दैट लीड्स टुवर्ड्स अनदर मिनी इंजरी दैट वाज जिमी नीशम. How do you see के जो fielding lapses है I wanna come towards that because that was the important point क्योंकि उसके बाद रसी वेंडर डूसन ने एक्सेलरेट किया क्विंटन डिकॉक ऑफ कोर्स सेंचुरी 20 स्कोर उसके बाद भी किया और आउट हो गया बट एनीवे how do you see was it only down to Kiwis being mentally down जब आज उनका दिन नहीं था how do you see those fielding lapses? बेसिकली हम सब अवेयर हैं कि कीवीज की फील्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग साइड, बट ऑब्वियसली Yeah. आज ज्यादा लैकिंग थी नीशम के सिंगल ओवर में क्यूडी के और आबिडी बोथ वर ड्रॉप, दोनों एक ही ओवर में ड्रॉप Yeah. हुए. अनदर ओवर ऑफ नीशम जिसमें भी एक प्लेयर जो है वो ड्रॉप किया गया था, मिस फील्ड्स हाँ. सेम ओवर में ड्रॉप हुए थे. बोल्ट एडेड, सो बोल्ट ड्रॉप कैचेस टुडे. सो आई वाज, उसने 2 मिस फील्ड्स भी किए हैं. सो ओवरऑल फील्डिंग का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट किया है इनकी गेम के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली 2 सेट बैटर्स अगर आप लोग सही टाइम पे नहीं pick कर रहे हैं, उनको ड्रॉप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू दे विल पनिश यू, सो दे पनिश यू. Yeah. और उसके बाद फिर यही हुआ है कि जब एक दफा उनकी ग्रिप गेम जो उनकी ग्रिप से निकल गई, देन दे स्टार्टेड. और ऑब्वियसली इनकी फिर जो डेथ बॉलिंग है वो हेनरी भी नहीं था, तो बिल्कुल भी जो है वो सिक्योर नहीं थी. निशम एंड रविंद्रा, इनका बॉल के साथ कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं जा रहा है. विद द बैट दे आर टू Yeah. गुड, विद द बॉल दे हैव नो इम्पैक्ट ओवर द गेम. So it was just Phillips and Santner. Santner bowled very well throughout the game, almost throughout the game. He didn't cross economy of around 4.5 something. Start में तो उसकी economy I guess something कुछ थी. So but And he, 59 concede किया. Yeah. yeah, but he didn't pick any wickets, and that was the point कि आपकी जो middle overs थे जिसमें आपकी partnership build हो गई, उधर आपने विकेट नहीं पिक किया इनकी, तो जिसकी वजह से फिर उनके जो इतनी स्ट्रॉन्ग साइड नहीं थी स्पिन की, उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया. देन दे अटैक, और उसके लास्ट जो 20-25 ओवर से वो फिर उन्होंने कैपिटलाइज कर लिया उस चीज की. Yeah. Coming towards you, किसा साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट करते हैं. Last night show I went on to slander David Miller and it was kind of based on facts as well, based on stats as well कि big game, big tournaments में performances उसके निस्बतन कम है as compared to the bilaterals. बट आज उनको इन अ वे ऊपर भेजा गया, क्लैसन से भी ऊपर भेजा गया. इट वाज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग मूव बट इट डिड वर्क कि उन्होंने लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बो बरकरार रखा. सो
हाउ डू यू सी द साउथ अफ्रीकन बैटिंग टेम्पलेट? हर मैच में वो तकरीबन आखिरी के 20 ओवर में 9-10 के स्ट्राइक रेट से करते हैं, सो हाउ डू यू सी लाइक पुट आउट योर प्रॉप्स फॉर साउथ अफ्रीकन लेट मिडल ऑर्डर? So over to you. आई थिंक बीइंग इन फॉर्म हेल्प्स अ लॉट। जिस तरह डी कॉक है वो प्रेशर नहीं आने देता मिडल ऑर्डर पे, इवन लोअर ऑर्डर पे। और जब लोअर ऑर्डर पे आपके पास जेंसन जैसे प्लेयर है जो कि इतनी कमाल की वो शॉट्स खेलता है, मतलब रियली एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट फॉर मी। तो मुझे नहीं लगता उनको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत है, बिकॉज डूसन इज समवन हू कैन एंकर द इनिंग्स। फिर मार्कर हमें वो तेज़ खेल सकते हैं, फिर क्लासन जिस तरह आपने बात की, और फिर मिलर है। मिलर ये है कि वो थोड़ा सा टाइम लेंगे सेट होने में। ही मे टुक 20 बॉल्स बस। 20 भी कम कह रही हूँ मैं, लाइक 15 to 16 बॉल्स ही वुड टेक टू गेट सेटल। अगर एक दफ़ा वो सेटल हो गए हैं तो फिर आई गेस काला जादू ही इन्हें रोक सकता है। तो ये, और उनकी जिस तरह की फॉर्म है, ऐसे भी नहीं कि किसी प्लेयर की फॉर्म ना हो, सब प्लेयर्स की फॉर्म है। और हर हर दिन कोई ना कोई प्लेयर टर्न अप कर रहा है। तो बहुत मज़े की लाइनअप है साउथ अफ्रीका की। अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान नहीं जाता इन द सेमीज, तो आई वुड बी रूटिंग फॉर साउथ अफ्रीका, क्योंकि जिस तरह की टीम है, ऑलराउंडर टीम है। इवन इनके बॉलिंग यूनिट का हर कोई कह रहा था कि भाई हो सकता है कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर लें, बट देयर बॉलिंग यूनिट इज़ डूइंग गुड एज वेल, इवन अगेंस्ट द गुड टीम्स। तो बहुत मज़े का इनका वो बन सकता है, क्या कहते हैं, प्लेइंग 11 मज़े की बनती है, बैटिंग ऑर्डर मज़े का बनता है, शफल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, बहुत मज़े का, मतलब एक कह लें एक आइडियल लाइनअप है इस वक्त साउथ अफ्रीका की। और डूसन की अगर आज मैं इनिंग्स की बात करूँ तो शुरू में स्लो थी, आई गेस बिकॉज ऑफ द पिच। ही वाज मतलब थोड़ा कॉशियस होकर खेल रहे थे। फिर जिस तरह निम्रा ने कहा कि थोड़ा सेट हुए, तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा जी अब तो हम तुम्हें मारते हैं। और फिर जिस तरह से उन्होंने शॉट्स खेले, दैट वाज अमेजिंग, मतलब बहुत मज़ा आया देख के। और इस तरह का, और ये भी है कि मतलब वर्ल्ड कप से पहले बिल्कुल डसन की फॉर्म नहीं थी। ही वाज़न्ट इन फॉर्म, ही वाज़न्ट, उसका वो इनिंग्स नहीं चल रही थी। और वर्ल्ड कप में आते ही डी कॉक भी जिन बन गया और डसन भी। तो बहुत मज़ा आया देख के मुझे। और इसका डसन की इनिंग्स का क्रेडिट यहाँ पे डी कॉक को भी जाता है, क्योंकि जहाँ पे डसन थोड़ा स्लो स्लो कर रहे थे, मतलब वो सिर्फ एंकर कर रहे थे, तो डी कॉक वाज टेकिंग चार्ज ऑफ दैट हेड। तो दिस आल्सो हेल्प डसन टू प्ले लॉन्ग एंड फ्रीली। और जब वो सेट हुए तो फिर उन्होंने बता दिया कि वो किस तरह के प्लेयर है। तो बहुत मज़े की इनिंग थी डूसन की, बहुत मज़ा आया। Yeah, well put, well put. आपने साउथ अफ्रीका पे टच डाउन किया है इन डेप्थ. Viewers, our poll you can see in the live chat. It reads as, can South Africa beat India? Because South Africa have been putting scintillating performances with a bat and ball. India, we all know, a different like I would say different planet पे खेलते हैं, but are they close enough to beat India? Have your thoughts? Because probable लग रहा है कि एक मैच तो ऑफ कोर्स होना, दो मैचेस भी हो सकते हैं सेमीफाइनल या फाइनल. सो डू यू थिंक साउथ अफ्रीका हैव रियलिस्टिक चांसेस टू बीट इंडिया? हैव योर से इन द वोट. Nimra, coming back towards you, half time, like innings break, how are the odds you giving to both teams? 50-50, 60-40, very quick fire. Yeah. 70-30. 70 for South Africa and 30 for New Zealand. Hussaina, what about you? Okay, I was thinking the score is chaseable and they New Zealand has the Hmm. lineup to score it. रविंद्र अगर चल जाता and डैरल मिचेल तो इधर रुक जाता तो हो जाता, but All right. जरूरत नहीं। Uh, I still thought कि ऑस्ट्रेलिया का जो बैटिंग टेम्पलेट, लाइक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो न्यूजीलैंड ने यार परफेक्ट चेस की थी, they would replicate it. So I was giving 60-40 to South Africa. Kisa, very shortly, 60-40, 70-30, over to you. 80-20, मुझे पता था बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप में बहुत फर्क है। साउथ Uh, अफ्रीका की बॉलर which ज़्यादा I इन्फॉर्म said, perfect segue to the second innings. Uh, न्यूजीलैंड ऑफ कोर्स, viewers आप समझे देख है। सकते हैं सेकंड न्यूजीलैंड इनिंग में बहुत का. चस था वैसे बहुत चस थी। Yeah, bada maza hai. We're gonna break it down. We're gonna break it down. New Zealand got all out on 166-7. Viewers, if you haven't been able to watch the match, here is the convenience for you. Will Junk, Glenn Phillips top scorer रहे, मार्को जेनसन और केशव महाराज की परफॉर्मेंस विद बॉल रहे साउथ अफ्रीका के लिए. एंड ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड 190 रन से हार चुकी है. मूविंग टूवर्ड्स यू, निम्रा. Devin Conway has a good start to the World Cup. He has been in the good nick. He has been one of the best performers for past 2 or 3 years as well. But um,
पिछले 3-4 मैचेस से आई वुड से ही हैजंट बीन दैट गुड. आज भी जल्दी आउट हो गए. एंड द टॉपिक आई वांट टू डिस्कस इन डिटेल विद यू दैट इज रिगार्डिंग विल जंग. आज उन्होंने प्रोडक्शन पे उनकी वीडियो भी दिखाई कि हाउ इज गेटिंग डिसमिस्ड. इमाम के फ्लैशबैक्स आ रहे थे बट वो आते रहेंगे कि एक ही तरह लाइक एक ही जोन में आउट हो रहे हैं. एक ही तरह की बॉल कराओ, एक ही जोन में कराओ, ही वुड गेट आउट एंड दैट इज फोर्थ फिफ्थ विकेट. सो टॉप ऑर्डर का कोलैप्स आप कैसे देखते हैं एंड हाउ न्यूजीलैंड आर गोइंग टू फिक्स दैट विल जंग dilemma? Over to you. So basically, I'll blame Young for Conway's dismissal to straight two Mm-hmm. games because Young creates pressure by playing dots or just beating the balls. And then in a high pressure game or a high scoring games, Conway tried to hit on, and then he threw a wicket. So basically, I am actually blaming Young for Conway dismissals from the last two games. And basically, Conway was not in a proper form. He was in a zigzag form since the pre-World Cup. Also in the England series, he made a ton and then he stopped. And then in the World Cup, he started well and he stopped. So basically, I'm not able to being judge that if it's actually his form or it's because of Young player style of play. So basically, Young is causing dismissals of Conway from the last two games. And Young, obviously, his dilemma, he's basically the glorified version of Imam. I was very in for him in the World Cup, pre-World Cup, because he was quite averaging around 49 or something in the ODI. And I was so like, nahi, Alan ko nahi khilana, Phil Allen shouldn't be in the ODI lineup yet. So I was so Yeah. in for Young. I was so hyped for him. And actually, I picked him for my fantasy game as well. So that is costing me points as well. So I'm actually excited and Young Kyo kar rahe hain, same zone, same type of dismissals, same types of dismissals cost to other batters. So obviously, I was expecting Kane क्योंकि Kane आपकी top three को stabilize कर देता. Conway and Rachin are the strikers of the ball, so they are good for the opening. And at third, you need a stabilizer in ODI. So Kane was there for at that. और उन्होंने भी जो innings खेली World Cup में ACL injury के बाद, although he recovered quite quickly, जो ACL के लिए इतनी normal नहीं होती, he came back and then he made 78 around and then he got retired in that game as well. So I was expecting Kane in this game against South Africa. Not because just Yeah. his batting, because of it, obviously his captaincy as well, because we all saw what Latham is capable of with the bat as well and with the team in needed as well. So basically, Yeah. जो इनका टॉप ऑर्डर का जो इस वक्त मेन डायलेमा है वो ये है. कॉनवे की फॉर्म तभी हम डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड कप और प्री वर्ल्ड कप भी उनकी फॉर्म zigzag में चल रही थी. तो वी कांट जज जब तक क्योंकि अभी पिछली दो गेम्स हाई स्कोरिंग थी, तो दोनों गेम्स में यंग वेस्टेड अ होल ओवर जिसकी वजह से पे कॉनवे प्रेशर है एंड देन ही ट्राई टू हिट ऑन एंड उसके बाद फिर उन्होंने अपनी विकेट फेंक दी दोनों गेम्स के अंदर. अभी हम नहीं डिसाइड कर सकते बट ऑब्वियसली दे नीड अ स्टेबलाइजर इन देयर टॉप थ्री. बेसिकली डिपेंड्स ऑन राचिन ओनली. आपके अगर दो टॉप ऑर्डर डिसमिस हो जाते हैं फॉरन तो आपके पास फिर राचिन है. टुडे राचिन डिडंट वर्क, सो वी सॉ कि हमने देख लिया कि इनके साथ क्या हुआ नेक्स्ट ऑर्डर के अंदर. और बस यही इनकी विलियन की यही है कि इनकी ग्लोरीफाइड वर्जन ऑफ इमाम. आई एम सॉरी टू से लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर यही दिखा. So that was about it. Yeah, it was lovely to hear. It was lovely to hear. On this note, let me welcome Zain Khan on the show. Zain, thank you for your comment, which reads as, today's match was fun. वो क्या कहते हैं कुदरत के निज़ाम. Yes, it is in action. Yes, it is in action. I think so. Usama ने भी कोई comment किया. He's saying New Zealand were going to face some music after they had their sweet time with Aminos. Uncomfortable conversations. We might have at the very end segment. Do look out for that. It is a very catchy and innovative one. But let's have props to South Africa. Kisa, moving towards you. जो mentioned out कि बड़ा मजा आ रहा था उनके dismissals देखने में. It started with, I mean, Jensen, who has been the breakthrough star alongside Dilshan Madushanka, alongside Abdullah Shafiq. So how do you see? I mean, he is literally doing magic at that step and making World Cup his own. I mean, Rabada को भी at times overshine कर जाता है. So how do you see Yes. his performance today? आई थिंक जेंसन की अगर बात करें तो उसने अब तक काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है कंपेयर टू द एक्सपीरियंस वन पेसर्स. और अहमद याद होगा जो हमारा पॉडकास्ट थी विद जेरड कैम्बर, तो उसमें आई आस्क हिम हु इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट फॉर यू, तो ही सेड मार्को. तो यस, आई मीन ही वाजंट रॉन्ग. तो बहुत मज़े का प्लेयर है. उसके अलावा महाराज की जिस तरह
फॉर्म लगी रही है, जिस तरह उनकी बॉल स्पिन और टर्न हो रही है, वो भी साउथ अफ्रीका के लिए इस वक्त साउथ अफ्रीका के लिए कोई मसले की बात है ही नहीं। कुछ मसला है ही नहीं। महाराज बॉलिंग करा रहे हैं तो वो स्पिन हो रही है, मार्कर हम बॉलिंग करा रहे हैं तो वो खेले नहीं जा रहे, कोटजी बॉलिंग करा रहे हैं तो उनकी अच्छी लाइन जा रही है, और जॉनसन बॉलिंग करा रहे हैं तो वो हिज कैच भी सेलिब्रेशन हो रही हिज सेलिब्रेशन है। मुझे किलर लगते हैं, तो उसके सेलिब्रेशन होते हैं क्वाइट सही। या गो ऑन। कोटजी वो जिस तरह का वो एग्रेशन शो करते हैं, मतलब आई थिंक देयर इज नो लूप होल साउथ इन साउथ अफ्रीका सो फार। और जिस तरह हाँ थोड़ा सा चेजमैन उनका मसला होता है, बस एक ये थोड़ा उनके लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, बट इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग जो उन्होंने आज की बहुत मजे की बॉलिंग थी। और जिस तरह निमरा ने कहा कि न्यूजीलैंड का वो जो ओपनिंग का एक मसला आ रहा है, और फिर नीचे से कोई आज जयरम नचल स्टैंड आउट कर जाते हैं विद फिलिप तो शायद कुछ बन जाता, कोई अच्छे रन बना लेते, लेकिन मसला उनको ओपनिंग में आ रहा है। फिर रविंद्रा की जिस तरह की फॉर्म लगी, जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस की, आई गेस उन पर भी काफ़ी डिपेंडेंसी आ जाती है। ज़ाहिरी बात है केन विलियमसन नहीं है, जब आपके टॉप प्लेयर मिस आउट कर जाए वर्ल्ड कप के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। तो साउथ अफ्रीका ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और बहुत मज़े की बॉलिंग की, बहुत मज़े की बैटिंग की। और मेरी दुआ तो यही है कि पाकिस्तान टीम भी साउथ अफ्रीका से कुछ सीखे और इसी तरह की बैटिंग और बॉलिंग करे न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि फिर बमूमा ने आके हमें कुट देना। Wonderful to put it out. Hosanna, coming towards you, I would have a bit detailed discussion about more regard that discussion would be directed towards Nimra, of course, but साउथ अफ्रीका के आज के बॉलिंग परफॉर्मेंस देखें। आज वैसे उनकी स्टिक टूटी पहली दफा कि जो भी उनके बॉलर्स बॉल कराते थे उनमें से हर कोई एक एक विकेट लेता था। आज उनकी ये स्टिक थोड़ी सो कुडोज टू न्यूजीलैंड, आज लोग एनगेटिव विकेट नहीं ले सके, बट अगेन दैट इज जस्ट ऑन लाइटर नोट। विच बॉलर आज के परफॉर्मेंस की बात करूं, जॉनसन एंड केशव महाराज। फॉर मी केशव महाराज वाज रियली गुड। पिच वाज ओके इनफ, like movement मिलना शुरू हो गई थी, कैपिटलाइज ऑन इट इवन अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडर्स। न्यूजीलैंड के लाइनअप में 3-4 लेफ्ट हैंडर्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो हाउ डू यू सी दैट स्पिन डेमन केशव महाराज? और उनको आई थिंक सो ही वाज फीलिंग कॉन्फिडेंट एज वेल, जो हमारे खिलाफ मैच जितवा के हैं। सो हाउ डू यू सी हिज परफॉर्मेंस टुडे? Okay, so Keshav Maharaj impressed me so much with his bowling, like and Kozia, so he took one wicket जो starting में was a really important wicket, वो भी अच्छी bowling करा रहा है। and Keshav Maharaj, I don't, he's excellent with the ball of the century, Jimmy Neesham को जो ball करवाई है, that spun so much, it was such a good ball, वो such a good ball। वो बेचारा stop करने गया, वो बेचारा injured है, वो net run rate के चक्कर में आ रहा है, you treat him like that, तो बदतमीजी है। but you know for one second ये है कि for one thing South Africa की weakness है, South Africa is not bowling full 50 overs, सारी batting they are bowling out oppositions for fun, but with a team like India हो सकता है कि वो बैटर्स रुक जाए पिच पे। तो आई वांट टू सी हाउ वुड दे बोल, क्योंकि एंड पे देयर वीकनेस है उनकी कि वो एंड पे रन्स लीक कर देते हैं, बट एट द पॉइंट आने ही नहीं देते वो लोग, ऑपोजिशन को बोल आउट कर देते। सो बस गुड परफॉर्मेंस, बट लेट्स सी आगे इंडिया, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच। Okay, all right. Wonderfully put. Switching the discussion back to you, Nimra. Can you hear me out, guys? Right? Yes. Yeah, okay. I was just making it sure. Nimra, switching back to you. एक ही प्लेयर स्टैंड लेता है। You have touched on the absence of Kane Williamson. I have one thing more to say Kane Williamson, लेकिन वो मैं एंड वाले सेगमेंट पे बात करूंगा। सॉरी फॉर माय बैड थॉट। आज ग्लेन फिलिप्स की इनिंग्स जो होती है, हमारी प्री मैच चैट चल रही थी, तो आई सेड के ग्लेन फिलिप्स को एक इनिंग्स जो है, ही प्लेड अ सॉलिड नॉक, लाइक बैंग बैंग करने के, मीनिंगलेस नॉक थी इन अ वे, बट नॉट दैट मीनिंगलेस के ये रन्स अभी भी मैटर कर सकते हैं। न्यूजीलैंड का रन रेट इतना भी बुरा नहीं गया। एट वन पॉइंट दे वर looking to be got out on 100. So how do you see him getting back into the runs? Of course, it would be a much needed booster के वो अगले 2 मैचेस जो श्रीलंका पाकिस्तान के साथ बच गए। So how do you see his World Cup overall और आज की परफॉर्मेंस पे जरूर टच ऑन करें।
Phillips की innings obviously it was due. He, he was working well with the ball, but with the bat I was expecting much more in World Cup from him. लेकिन आज he proved और it was a pressure innings. Obviously winning cause के लिए नहीं होनी थी, but he tried to manage the net run rate. So for us it was easy if they got out under the 150 par, but obviously उसके mind में भी यही सब होगा. So he tried to go above that. So at that point, when he was batting along with Trent Bolt, and Trent Bolt was defending everything. Like I was, it was making look like a test match. So I was so laughing at it. कि क्या हो रहा है? And then Phillips all hitting from the other end. But it was just to try to manage the net run rate. Otherwise, they were already doomed. They knew it. तो बेसिकली फिलिप्स की इनिंग जो है उनके नेट रन रेट के लिए तो हम कह सकते हैं किसी हद तक कुछ एडिशन है उसके नेट रन रेट में उनको कंट्रोल करने के लिए, बट उसके अलावा उस इनिंग्स का कोई फायदा नहीं हुआ. अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपकी एम्बैरेसिंग एंड नहीं हुआ आपकी हारने के ऊपर. मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 100 भी नहीं करेंगे, मतलब जो उनकी इट वाज दे वर लाइक 90.67. तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं 100 भी होता है इनका कि नहीं होता, बट हो गया इस वजह से हो गया. नेक्स्ट इन मैचेस इनके जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ हैं. ऑब्वियसली दे हैव अ मेंटल ब्लॉक अगेंस्ट पाकिस्तान. So the Dilolulu fan in me के thinking कि okay we will defeat them, हम हो जाएगा काम. लेकिन एक्चुअली थ्रूआउट द वर्ल्ड कप हो ये रहा है कि जो आपकी ये कन्वेंशनल चीजें हैं वो नहीं हो रही, अदर देन द न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मैच वो भी बहुत क्लोज गया, बट अदरवाइज जितनी भी आपकी कन्वेंशनल राइवलरीज हैं वो सब ब्रेक हो रही हैं. अभी जैसे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का हेड टू हेड इन द वर्ल्ड कप्स, दे ब्रोक इट वेल. सो अब जो है वो नेक्स्ट हमारा जो है वो उनका ऐसी जो इवेंट्स के अंदर हमारा जो है उनका हेड टू हेड हम जरा हैवी एंड पे हैं, और दूसरा हमारा उनका हमारे अगेंस्ट मेंटल ब्लॉक भी है. बट मैं तो यही चाहूंगी बीइंग पाकिस्तानी फैन कि आपके जो है पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीत जाए, बट हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आई गेस इनका नेक्स्ट मैच दोनों मैच जो है वो बेंगलुरु में. तो हाँ जी, तो बेसिकली कि हम वहाँ पे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली अब प्रेइंग फॉर गुड फॉर पाकिस्तान कि आपकी जो है वो हमको जरा जल्दी कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ अब इस पॉइंट पे नहीं है ना कि हमने जीतना है, हम इस पॉइंट के ऊपर भी हैं कि हमने कितने मार्जिन से जीतना है और अपने नेट रेट को कैसे बचाना. तो दैट वाज ऑल. अगर वैसे भी श्रीलंका के मैच में इनकी आई थिंक बारिश जो है वो प्रेडिक्टेड है, तो ये वॉश आउट भी हो सकता है. अगर वॉश आउट हो जाता है और ये हमसे हार जाते हैं तो ऑब्वियसली विल पास थ्रू और फिर ये आ जाएंगे, बट इट्स ओके फॉर पाकिस्तान. Yeah, here you heard the perfect script. We're gonna clip it out. if Pakistani fans were ever gonna need a perfect script, so you heard it here first. On that note, बेसिकली साउथ अफ्रीका की ओवरऑल कोई वीकनेस नहीं है, बट जो डेथ बॉलिंग है वो बहुत रश है. एज हुसैना सेड अभी तक उनको इतना वो ही नहीं मिला, वो इतने एक्सपोज नहीं हुए उनकी जो डेथ बॉलिंग है. बट जिस दिन उनकी इंडिया के अगेंस्ट मैच होगा, ये बहुत अच्छा मैच होगा. हम देखेंगे कि वो डेथ बॉलिंग कैसे हैंडल करते हैं अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ इंडियन बैटर्स. तो ये इनकी है, अदरवाइज दे आर ऑल कवर्ड. At that moment, let me have the comment of Zain Khan, who is endorsing the point which Nimra put. Grant Phillips' innings will be very crucial for New Zealand net run rate. He has even went on to say, "Mark my words." Okay, we are going to take a screenshot of it, Zain Khan, if you allow us to do so. Then moving forward, Zain Khan says New Zealand's cockroach mode was hilarious. Yeah, it was hilarious. So anyway, match was overall really funny, really lively. Of course, Pakistan के लिए अच्छी situation बन रही थी. Moving forward, we have a last segment. And Nimra, let me put out the comment so that you can see the full screen. So viewers, we are going to play a wheel of blame. You can see a wheel, virtual wheel, ठीक है. तो 3 पैरामीटर्स बन रहे हैं न्यूजीलैंड के आज की हार के. वी आर गोइंग टू आस्क निम्रा. इधर मैंने इक्वल पुट कर दिया, इक्वल रेशियोज में लाइक 33. बट वी गना आस्क निम्रा के मेजर फैक्टर क्या था, फिर माइनर फैक्टर क्या था, या कोई फैक्टर नहीं भी था. तो she is gonna explain it all. So Nimra, excuses देना शुरू करें Kiwis की लॉस को from high then low and then the lowest. Over to you. I will like to add 2 points in it. एक तो आपकी कैप्टनसी एंड देन आपकी फील्डिंग. इन दोनों ने एटलीस्ट आज के मैच में बहुत क्रूशियल पार्ट, नेगेटिवली बट क्रूशियल पार्ट प्ले किया है, क्योंकि न्यूजीलैंड लॉस्ट गेम एट द टॉप. आपको पता है कि पुणे पिच किस तरह बिहेव करती है, एंड देन आपको ये भी पता है कि साउथ अफ्रीका इज पुटिंग अप heavy totals when bat first.
सो आप उसके बाद क्या सोच के, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं समझ आ रहा कि लैथम में क्या चल रहा था कि उन्होंने जो है वो टॉस जीत के भी ये चीज दे दी। तो टॉस फॉर द क्रूशियल पॉइंट, वहीं पे आपकी हाफ गेम डिसाइड हो गई थी। ऑब्वियसली उनकी बैटिंग Yeah. लाइनअप इज पॉसिबल इनफ टू चेस सम टोटल्स, बट आप एक जो है अपनी कन्वेंशनल चीजें भी देखते हो कि आपकी पिच किस तरह बिहेव करेगी, आपको बैट फर्स्ट करना चाहिए या बॉल फर्स्ट। सो दैट वाज द फैक्टर, एंड द अदर वाज इनकी ये जो फील्डिंग है। आई विल ब्लेम दीज टू फैक्टर्स एट फर्स्ट, एंड देन द इंजरी पोर्शन। प्री मैच तो ठीक है, आपकी जो भी आपकी इंक्लूजन थी, इंक्लूडिंग आपका जो मिडल ऑर्डर इन्फोर्सर था, स्पेशली लॉकी, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग प्री वर्ल्ड कप के मैं ये वर्ल्ड कप के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, बट ही वाज परफॉर्मिंग। फिर वो इंजर्ड हो गए, एंड देन उसके बाद आपके जो है वो गेम के अंदर भी आपकी जो वो हेनरी को हैमस्ट्रिंग हो गई, वो भी बाहर हो गए। एंड देन उसके बाद फिर Yeah. आपकी जो यंग केन के बगैर आपका जो टॉप ऑर्डर था वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। ब्रेसवेल ऑलरेडी इनका वर्ल्ड कप से बाहर है, चैपमैन भी इंजर्ड थे, चैपमैन भी नहीं आज की गेम में थे। एंड देन लेथम हु इज बेसिकली सो यूजलेस। आई वाज वंडरिंग प्री वर्ल्ड कप भी के ब्लंडल क्यों नहीं है इस टीम के अंदर, क्योंकि Yeah. इन द पाकिस्तान सीरीज ही एडेड सो मच वैल्यू फॉर द टीम। और उसके बाद सो बेसिकली इन द ऑर्डर आई विल ब्लेम द कैप्टनसी, एंड देन द fielding, and then the injuries, and then the batting, and then the bowling Oh, okay. So of it's blame. gonna look like, yeah, okay. Let me have captaincy first, because you have added another facet. Let me pull निम्रा out. यार छोड़ दो Uh, लथम को यार, छोड़ दो यार, छोड़ दो। okay, मैनेजमेंट का फैसला होता है यार, so सारा उस पर तो so ना डाल। captaincy I has was gone with getting price. him कि okay, he was doing good for the World Cup, वो अच्छा कर रहा था, I was surprised as well, but आज बिल्कुल it was a brain freeze moment for him। क्या डिसीजन लिया? So लेकिन the Nimra, toss is on That like was so management horrendous। as well, it's not only on captain, तो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा दे दो यार, कुछ तो Okay, कर। अगर हम कैप्टनसी को छोड़ भी दें, what did he do with the bat? हाँ बैटिंग ऑफ कोर्स यू आर राइट देयर, लेकिन अब अगर आप लथम को और केन विलियमसन को आप कंपेयर करना है एज इन लीडरशिप, तो ये तो फिर ज्यादती है लथम के साथ। हाँ, केन Kane विलियमसन Williamson तो is बहुत on a अच्छा है, whole other pedestal. वाकई। Kane so Williamson yeah, okay was guys. okay, okay was okay with Latham, because pre World Cup जब Kane injured था तो it was a tie between Latham and that was okay। Latham सही है, सऊदी से तो बहुत ऊपर वो बेहतर था, और still मैं रही हाँ इसमें लथम के पास सब कोई ऑप्शन भी नहीं था, आई ऑप्शन गेस नहीं। लथम बाजी था, लथम ही था, हाँ, उसी पे ही सहारा करना Okay. पड़ा। Yeah, yeah. Nice to hear you from you, Nimra. So, if I have guessed it right, Nimra ने वैसे रैंकिंग बता दिया, कैप्टेंसी, then injuries, then batting at as far as low as bowling. So yeah, viewers, that is a wheel of blame. Hope you enjoyed that segment. We will be moving shortly towards the last segment. Of course, Nimra. So New Zealand having won the 4 games on top of the table. Now, all of a sudden, things are looking grim for them. Kane Williamson is still not fully fit. He is deemed to be fit in for Sri Lanka tie. पाकिस्तान के मैच में शुक्र है he is not available. So do you still think इनमें से एक मैच जीत जाएगी न्यूजीलैंड पाकिस्तान या श्रीलंका के खिलाफ, या do you think they are mentally physically gone? बेसिकली जो न्यूजीलैंड की जर्नी अगर आप थोड़ा वर्ल्ड कप देखें तो ऑब्वियसली दे वन गेम्स अगेंस्ट कंपैरेटिवली वीकर टीम्स, बट अगर आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टीम पे देखें तो बोथ गेम्स वर वेरी क्लोज। उन्होंने गिव अप नहीं किया किसी पॉइंट के ऊपर भी। लास्ट इवन द ऑस्ट्रेलिया गेम वाज हैवी टोटल गेम, लेकिन उन्होंने भी उसको लास्ट तक ड्रैग किया, एंड इट वाज देयर अनलकी और समथिंग का रन आउट हो गया व्हाटएवर। लेकिन उन्होंने कहीं पे हम ये नहीं कह सकते कि वन साइडेड गेम गई है और दे गिव अप। उनकी नेचर में ही नहीं है बेसिकली गिव अप करना। आज भी फिलिप्स उनको पता था इट वाज अ कॉन गेम, बट फिलिप्स ट्राइड फॉर द नेट रन रेट। सो हम उनको कभी भी जो है ना वो आउटले नहीं कर सकते कि ये तो बिल्कुल इनका रिटर्न पॉसिबल ही नहीं है। और क्योंकि मैं अभी आपको बताया था बीच में कि हमारी जो कन्वेंशनल रेवलरीज हैं या रिजल्ट्स हैं वो चेंज हो रही हैं, सो हम कुछ कह नहीं सकते। और ऑब्वियसली सम फ्रेंड ऑफ माइंड वाज सेइंग कि ओके अब ये जो है ना अब ये हमें पड़ जाएंगे क्योंकि ये इनको साउथ अफ्रीका ने इस तरीके से आउट कर दिया। सो आई वाज नॉट मेरे जहन में ये नहीं चल रहा था कि हम इस तरह डील करेंगे, बट ऑब्वियसली इट्स अ वर्ल्ड कप स्टेज। और लास्ट वर्ल्ड कप में जो फाइनल में उनके साथ अनफेयर चीज हुई थी उसके बाद ऑब्वियसली दे आर डेस्परेट फॉर द वर्ल्ड कप, सो दे ट्राई देयर Yeah. बेस्ट। हमारे लिए आज ये है इस वक्त कि हमारे पास इनके अगेंस्ट मेंटल ब्लॉक जो है वो नहीं है, हम इनको किसी तरीके से हरा सकते हैं। और उसके बाद साउथ अफ्रीका के श्रीलंका के मैच में आई डोंट थिंक सो कि न्यूजीलैंड को कुछ स्ट्रगल होगी जीतने भी।
तो हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि वहाँ बारिश हो जाए, तो गेम वॉश आउट हो जाए और हम अपने मैचेस जीत हैं, तो थोड़े बेसिक जरा अच्छे मार्जिन से तो हम इन हो जाएंगे और ये बाहर हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त बेसिकली मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान है वो टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, एक ही सिक्के की दो तरफ है वो। तो आप तभी की कॉक Yeah. है वर्ल्ड कप, आप इन्हें बाय नहीं कर सकते किसी टाइम के ऊपर भी। तो द Yeah, नेक्स्ट गेम वर्चुअल डिसाइडर कि आगे क्या होना है हमारे साथ। तो लेट्स होप द गुड फॉर पाकिस्तान टीम। inshallah, inshallah. So, Kisa, your final thoughts? Kisa, सॉरी, are आपकी you आवाज here में। with us? यस यस यस। हाँ, मैंने कहा your final thoughts. कौन क्वालिफाई कर रहा है इस पे बताना है। सॉरी, मुझसे क्वेश्चन मिस हो गया। आई वाज अवे। I just wanted to ask to put your final thoughts. Yeah. Final thoughts as in World Cup, I want Pakistan to qualify. वो नहीं होता, but I just want Netherlands to beat England तो so they can qualify for the Champions Trophy. एक मेरी ये ख्वाहिश है, दूसरी मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेले। तीसरी मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल नहीं खेलता तो साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप जीत जाए। तो बस यही है। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड गेम की, तो वहाँ पे आई गेस बारिश की भी प्रोडिक्शन है, लेकिन आई होप Yeah. कि वो जो मेंटल एनर्जी आती है वो हमारे पास आ जाए उस वक्त, और हम एक बॉडी लैंग्वेज जिस तरह की अगेंस्ट बांग्लादेश थी उसी बॉडी लैंग्वेज को कैरी करें। और आई वुड बी रूटिंग फॉर श्रीलंका टू बीट न्यूजीलैंड, ताकि किस्सा ही ख़त्म हो और बस श्रीलंका जिंदाबाद। थीक्षणा, डिसिल्वा, कुसाल मेंडेस, you Go guys on, are brother. my Go on, brother. Yeah. वो ना So, वो मीम डालनी हाँ, पड़ेगी, वो जो एक पीएसएल में वायरल हुई थी, Angela एक का शर्ट Angela चेंज Matthews will be the man. Angela Matthews will मैथ्यूज। be. आई गेस वो मीम बहुत बनी थी, हमें वही लगानी पड़ेगी कि हर मैच में हम टीम्स बदल रहे हैं। तो नेक्स्ट में श्रीलंका टू बीट न्यूजीलैंड इंशाल्लाह। yeah, inshallah. Hosanna, coming towards you, let me have the poll results here first. So the question was, can South Africa beat India? और ये इस मैच के बाद की डिस्कशन थी कि जैसी परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका दे रही है, कैन दे रियलिस्टिकली बीट इंडिया? So 43% people have gone with yes and 57% no. So if that is that close, we can expect a really close match. बट मैं इस पॉइंट पे ये बात करूंगा कि एक तरह से डेड रबर मैच होने लगा है। बोथ टीम्स विल प्ले देयर बेंच स्ट्रेंथ, आई वुड से मेन प्लेयर्स को रेस्ट देंगे। इफ दे आर टू प्ले इन फाइनल और सेमीफाइनल, दैट इज द मैच टू लुक आउट फॉर। बट या at that moment, if I am to pick on that, I would go with 60-40 in favor of India. Hosanna, your final thoughts and have your yes or no on that question as well. Okay. So same 60-40 ratio of South Africa beating India, and to say New Zealand they could make a comeback. We don't, but the injuries, like I'm like the injuries are. So the thing is, कि, so anything can happen. Sri Lanka can beat New Zealand, and अब हमारी फेथ हमारे हाथ पे अभी। तो लेट्स सी हाउ इट गोस, क्योंकि हम अपने रिकॉर्ड सारे तुड़वा रहे हैं, अपने साउथ अफ्रीका से भी हार के आए। लेट्स सी, I hope everything goes well and we make it through the series. All right. उसामा ने कंस्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट कर दिया। इट काइंडा हैपेंड 2019 वाले वर्ल्ड कप में भी। as Usama goes on to say, India is going to lose against Sri Lanka. So here you go, Pakistani fans, you have got that kind of आई होप साउथ अफ्रीका हार जाए conspiracy. इंडिया से। उनको थोड़ा जो चॉकिंग जीन्स है वो थोड़ा पहले ही हो Yeah. जाए, ताकि बाद में Okay. ना हो। All right. So, viewers, we are pretty much done with the rewind of today's match and our afterthoughts for the World Cup ahead, specifically on Pakistan. I am so much thankful to Nimra for taking precious time out. Nimra, thank you so much. I wish you best for your studies and all other stuff. Jitendra Samudrayan, thank you, Sana. Thank you, Kisa, for joining and making it a wonderful show. Thank you to you, viewers. Wholeheartedly thanks, Zan, Osama, Iris Khan, and all others who have joined throughout the show. And even if you are watching it back, abhi nahi dekh pa rahe, and if you are gonna catch us later, please make sure to drop your thoughts regarding the poll comment, regarding our show, regarding our segments, regarding Wheel of Flame. We would be
pretty much looking forward to your feedback. And please do make sure to drop a like. It helps massively in spreading the content. Subscribe if you haven't done so already. And yeah, Pakistan cricket team, Kudrat ka nizam keh lein ya whatever. We are pretty much in the World Cup. New Zealand, be very aware, be very aware. So yeah, on that note, on that note, myself, Ahmed, along with my folks, would say goodbye to all of you viewers. जितने सहमत रहे and Allah Hafiz. Yes.